Bismillahirrahmanirrahim. Today I am going to tell you about the basic structure of English sentence. Our English sentence is a combination of different elements. If we are going to understand the basic parts of or elements of our English sentence, we can write our sentence exact and correct. In the same way, if our sentence will be true in writing, at that time it means we will convey our message exactly and correctly with its own soul. Let's to understand about the basic element of English sentence. Sentence is basically divided into subject and predicate. Subject is again going to divide into noun, pronoun, infinitive, gerund and participle. It means we cannot write only noun or pronoun at the place of our subject. There can be other words we can use for the sake of our subject words that can be called infinitive, participle or gerund phrases or words. If we are going to divide predicate, predicate is going to divide into verb, object, phrase and clause. If we are going to divide verb, verb can be related to your finite and non-finite verb. If we are taking the example finite verb is again going to divide into transitive and intransitive plus helping verbs. Non-finite verb is going to divide into transitive, infinitive, gerund, present participle and past participle. In the same way, if we are going to divide object can be direct or indirect object. In the same way, phrase can be divided into different elements or components. Phrase can be related to your noun phrase, verb phrase, adverb phrase, adjective phrase, prepositional phrase, infinitive phrase, participle phrase, gerund phrase. If we are taking the example of division of clause is again going to divide into principal clause, subordinate clause and coordinate clause. Subordinate clause is again going to divide into noun clause, adjective clause, adverb clause. Now come to the point of our basic structures of English grammar. There are three basic structures of English grammar. Without knowing or without these three kinds of structures, we cannot write our sentence exactly. First structure is subject, verb and object. Second structure is subject, verb and adverb. Third structure is subject, verb and complement. When we are writing our sentence related to subject, verb and object, we will write our sentence, he writes a book. When we follow the second structure that is related to subject, verb and adverb, we will write our sentence, he or she sings a song politely at college at 9 o'clock. Whenever we are adopting the third structure for our English sentence, at that time there will be subject, verb and complement. We will write our this structure sentence, I am a teacher. Understand what is the purpose of first structure. First structure tells us just our short informative sentence. There is just information, he writes a book. वो एक एक किताब लिखता है.
Then he or she sings a song. This is our subject, this is verb, and this is adverb. Why we are adding more adverbs, more than one adverbs in our single sentence? What is the reason? The reason is our adverb is going to add something in the meaning of our verb. Let's take the example of this sentence. What is the exact meaning of, if we are talking about, or if we are writing our single sentence, she sings a song? It means every person, either he is she or he, either male or female, everyone can sing a song, no doubt. Why we are adding adverb in our sentence? When we are adding adverb in our sentence, it means we are going to change our feelings, our emotions, or the meaning of our sentence. Talking. She sings a song politely. It means when we will add something in the meaning of our verb, at that time it will change. If I say he or she sings a song politely, it means this specific person can sing a song politely. The rest of the people, either kids, either male or female, they cannot speak politely. This specific person can speak politely. If we are going to add another adverb in our sentence, at that time, this is called adverb of manner, this is called adverb of place, this is adverb of time. How our adverb is going to change the sense of, the feeling of the sentence. She sings a song politely means this person, either it is he or she, can sing a song politely. When we add the word acknowledge, it means when this specific person, either it is male or female, he or she can speak politely, can sing a song politely at college. Just he can sing a song politely at college, at home, at concert, in the street or in the park. She or he cannot sing a song politely. Again, if we are going to add something at 9 o'clock, the meaning of this sentence will be, in Urdu sentence or in Urdu words, we can convey this idea कि जब ये लड़की या लड़का जो है, जब ये कॉलेज में होगा और 9 बजे होंगे, उसी वक्त इसका गाना जो है, इसकी सिंगिंग जो है वो पोलाइट होगी. अदरवाइज ही और शी कैन नॉट सिंग पोलाइटली एट होम, एट कॉन्सर्ट, एट एनी अदर प्लेस. जब ये लड़की या ये लड़का जो है, जब ये कॉलेज में होगा और टाइम जो है अगर 9 बजे का होगा तो तब इसका गाना जो है वो पोलाइट होगा. अगर टाइम जो है वो 10 बजे का होगा, अगर टाइम 11 बजे का होगा, 12 बजे का होगा, तो इस बंदे का या इस औरत का गाना जो है या इस लड़की या लड़के का गाना जो है वो पोलाइट नहीं होगा. सिर्फ पोलाइट कब होगा? जब वो कॉलेज के अंदर होगी या होगा या उसकी टाइमिंग जो है वो 9 बजे होंगे, तो तब जाके उसका गाना जो है वो पोलाइट होगा. अदरवाइज देयर विल बी नो पोलाइटनेस इन हर और इन हिज सिंगिंग. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन why between a simple sentence and the sentence where we are using adverbs. Okay. The third structure is I am a teacher.
This is called a simple sentence. Subject, verb plus complement. Come to the point. This person is going to complete the meaning of I. When I say I am a teacher, or I write I am. The question is what I am. मैं क्या हूँ? Means I have to. It means I have to add one word to complete the idea of this verb. Now I am going to define the simple structure of the sentence in Urdu. Dear students, keep this point in your mind. अगर आपने अपना मैसेज जो है either that is related to English or in verbal communication, you have to follow the specific set of pattern of the sentence so that you can convey your message exactly. देखो, जब तक आप सेंटेंस जो है उसके कंपोनेंट्स के बारे में नहीं जानोगे, आपको नहीं पता होगा कि आपका जो सेंटेंस है उसके अंदर बेसिक उसके पार्ट्स कितने हैं, उसका सेट ऑफ पैटर्न क्या है कि सबसे पहले हमने कौन सी चीज लगानी है, उसके बाद कौन सी लगानी है और उसके बाद कौन सी लगानी है. बेसिक इंग्लिश सेंटेंस की जो कंस्ट्रक्शन है वो दो चीजों के ऊपर फॉल करती है. एक उसका सब्जेक्ट होता है और दूसरा प्रेडिकेट होता है. सब्जेक्ट जो है उसके अंदर हम नाउन वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रोनाउंस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इन्फिनेटिव वर्ड्स भी इस्तेमाल करते हैं, पार्टिसिपल और जेरेंट के वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं. ये सारे के सारे वर्ड्स जो हैं वो हमारा सब्जेक्ट को मेंटेन करेंगे. अगली बात कि प्रेडिकेट क्या चीज़ है. प्रेडिकेट के अंदर आपका वर्ब भी इस्तेमाल होगा, आपका ऑब्जेक्ट भी इस्तेमाल होगा, आपकी फ्रेज भी इस्तेमाल होगी, आपकी क्लॉज भी इस्तेमाल होगी. बिकॉज whenever we are talking about, जब हम इंग्लिश सेंटेंस सिंपल से कंपाउंड की तरफ जाते हैं या कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाते हैं तो उस वक्त हमें ये फ्रेजेस भी इस्तेमाल करनी पड़ती हैं, हमें ये क्लॉजेस भी इस्तेमाल करनी पड़ती हैं. तो जब हम प्रेडिकेट को डिवाइड करेंगे तो अगेन उसके अंदर वर्ब भी होगा, ऑब्जेक्ट भी होगा, फ्रेज भी होगी, क्लॉज भी होगी. वर्ब जो है वो डिवाइड होगा, फाइनाइट होगा, नॉन फाइनाइट वर्ब होगा. और फाइनाइट वर्ब जो है वो आपका ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब होगा. नॉन फाइनाइट वर्ब जब आप इस्तेमाल करोगे तो उसके अंदर आप इन्फिनेटिव को भी यूज करोगे, जेरेंट को भी करोगे, पार्टिसिपल को भी करोगे, पास्ट पार्टिसिपल को भी करोगे. यानी पार्टिसिपल जो है वो प्रेजेंट भी होगा, वो पास्ट भी हो सकता है. दोनों ऑप्शन उसके अंदर होंगे. इसी तरह जब आप ऑब्जेक्ट को लगाओगे तो आप कोई भी सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तो उसके अंदर आप दो तरह के ऑब्जेक्ट इस्तेमाल कर सकते हो, और वो है पहला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. ये दूसरे लेक्चर के अंदर मैं आपको फिर बताऊंगा कि जितनी ये सारी की सारी चीज़ें इनको अकेले अकेले मैं इस्तेमाल करके बताऊंगा कि आप किस तरह से किस जगह पर कौन सी चीज़ को आप एडजस्ट कर रहे हो और कौन सी चीज़ किस जगह पर वो करेक्ट होगी. अगर उसकी प्लेस जो है वो आप चेंज कर देते हो तो उससे आपका सेंटेंस जो है वो क्या होगा, वो इनकरेक्ट हो जाएगा. अब आते हैं कि फ्रेज क्या चीज़ है. कि फ्रेज इज अ combination of more than 2 or 3 words